स्क्रीन शेयर है स्क्रीन शेयर है Yes, Yes, sir. sir. ओके सो इफ यू सी लास्ट क्लास रे हमें कौन डिस्कस करथिलु बहुत ही बेसिक चार पांचटा ट्रिक डिस्कस करथिलु फर्स्ट ट्रिक ता हला बडाला फर्स्ट ट्रिक थला एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स ओके यूजुअली रॉन्ग वी नो दैट एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर यूजुअली रॉन्ग देन सेकंड ट्रिक कौन थला odd one out तीनटा ऑप्शन भितर गोटा दे odd थियो probably that is your answer okay थर्ड ट्रिक थला म्यूचुअल कंपैटिबिलिटी और म्यूचुअल इनकंपैटिबिलिटी ऑप्शन मानक भितर देखियो कोटा म्यूचुअली कंपैटिबल और इनकंपैटिबल ओके एटा गोटा बहुत ही भलो ट्रिक जदी तुमको किछि क्वेश्चन भी आसनो तो टोटली किछि भी आसनो तो फिर भी ऑप्शन भितर यू कैन मैच एंड यू कैन थिंक कि ओके ए दुटा ऑप्शन तो संगरे जाउन राइट so with that you can eliminate a few options then fourth we had understood about extrapolation कौन ना गोटे already existing knowledge किंबा understanding basis रे हमें ट्रिक बाहर करियो और हमें डिडक्शन करियो रिगार्डिंग करंट टॉपिक ओके existing knowledge माने already हम किसी जानिचु ता बेसिस रे एक्सट्रापोलेट करियो आ गोटे so I had given example जेमति कि सपोज हमें जानिछ कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप भितर सपोज सेंट्रल लेवल ले कोन हो तो इफ यू नो कि सेंटर रे इटा हुए ताले स्टेट रे भी सिमिलर होतो बोली एंड क्वेश्चन आसी कि स्टेट रे कोन हुए कि नहीं तो यू कैन अज्यूम कि स्टेट रे भी सिमिलर होतो एंड इफ यू यूज दैट ट्रिक यू फाइंड द आंसर दैट इज नोन एज एक्सट्रापोलेशन सो एक्सट्रापोलेशन रो हमें कंटिन्यू करिया बिकॉज़ एक्सट्रापोलेशन रो लास्ट रे मु सॉरी जो पॉलिटी ऊपर ही गोटे आंसर माने क्वेश्चन हमें दुटा पाखा के डिस्कस करथि सो लेट्स कंटिन्यू विथ दिस फ्रॉम टुडेस क्लास एक्सट्रापोलेशन देखो ये क्वेश्चन व्हाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन with reference to India's biodiversity Ceylon frogmouth coppersmith barbet grey-chinned minivet this should be minivet and white-throated redstart are what? This was the question and your options are birds, primates, reptiles, amphibians. What is the answer? Bird, sir. Very good. How did you know? Knowledge basis रे कहूଛ how did you know? Sir, knowledge basis से sir इटा solve करथिले इटा PYQ रे थिला तो sir I know this one. अरे knowledge basis रे कहनी तो my our entire discussion is not based on knowledge it is entirely based on logic using some tricks तो मते को सपोज तुमको जाना न थांता कि एगुडा कोन सब ओके PYQ सॉल्व करते ना लॉजिक बेसिस रे एटा सॉल्व करी हो कि नहीं Yes, sir. हबो सर मते लागुची एटा जेते व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट अछि थ्रोट वालाडा बर्ड वन कर बेसी हमको देखा जाए तो मैं सही लॉजिक रे मो बर्ड वेरी गुड देखो ये वर्ड को हमें फोकस करिया फ्रॉग माउथ मींस समथिंग दैट ईट्स फ्रॉग और फ्रॉग भलिया माउथ जा रही थियो सेकंड हला कि व्हाइट थ्रोटेड माने तारो बेकड़ा निश्चय कि छोटे लंबा हिथियो सेटारो थिबो बतन लंबा बेक वाला थ्रोट वाला ई भलिया को टाइप रो स्पीसीज को हमें नाम दो ओके वेरी देखो ईमान को भितरु रेप्टाइल्स भी ही पारे रेप्टाइल्स मान कर भी टिके लंबा जहार थियो तार नेक ही पारे एम्फिबियंस फ्रॉग टाइप रो जिंस तो हबो नाही यूजुअली बिकॉज़ व्हाइट ना थ्रोटेड एते फ्रॉग टाइप रो जीवन ना नंबर एते थ्रोट को किए देखु तांकर ओवरऑल माने जिंस को हम देखु स्पॉटेड अछंती किबा को गोटा कलर रो अछंती राइट आ प्राइमेट्स इन जनरल प्राइमेट्स ମାନଙ୍କର नाम तो इमते ही होबनी प्राइमेट माने प्राइमेट इज व्हाट समथिंग लाइक चिंपांजी ओके तो एमान को तो ए प्राइमेट्स मान को एटा तो केबे भी प्राइमेट से माने हेबे ही नाही बिकॉज़ प्राइमेट्स आर वेरी वेल नोन ओके वेरी वेल नोन प्राइमेट्स तो मान को इमते नाम हुए ही नाही तो प्राइमेट्स होबो नाही एम्फिबियन भी होबो नाही बर्ड्स और रेप्टाइल्स भितरे टाउ नाउ यू थिंक कि हमरो भाबो क्रेन व्हाइट नेक्ड क्रेन एमती अछि कि नहीं व्हाइट नेक्ड क्रेन तो देखो Yes, sir. बर्ड मानकर डिस्क्रिप्शन होची तांकर नेक थ्रो रे डिस्क्रिप्शन होची नेक थ्रोट बीक ओके जो हमर कोन कोन वल्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्चर्स अछंती ओके सो से मानकर सब नाम गुडा ई भलिया होय तनु व्हाइट थ्रोटेड माने एथियो किछ गोटा बर्ड ही सो दिस इज द मीनिंग एक्सट्रापोलेशन माने कोन एक्जिस्टिंग नॉलेज विषय हमें जानिछु सिमिलर कोन हुए ताकू यूज करके हमें गोटे डिराइव करछु so this is for example
a bird हमें देखो कौन कहू कि this throated bird okay कि हेतियो कि सपोज beak रे तारो नाम हेतियो तारो wings रे नाम हेतियो this is the example of extrapolation. Now another example देखो एटा which of the following statements are correct with respect to India's seed vault at Changla. Changla रे गोटे seed vault अछि सपोज तुम किछि जाननो या विषय just read the statements. First statement कहछि कि these seeds are preserved at sub-zero temperature using cryogenic technology. Second statement कहछि it is a step to conserve plant-based genetic pool of the country. Now you tell me कि statement पढ़ी मते कुह कि को statement टा तुम correct लाଗୁछि कोटा wrong लाଗୁछि. Red flag, green flag. Which statement is red flag? Which statement is green flag? Or both red, both green? What do you think? Anyone? Sir, both green. Why? Sir, first ଦେଇଛି ଆମର କି seeds are preserved at the sub-zero temp creating using cryogenic technology. ତ cryogenic technology ଆମର ସେଇଟା କି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ below sub-zero temperature ରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ preserve କରୁ. ଏଇଟା sir ଆମେ use ବି କରୁ ଯେମିତି ଆମର ରହିଗଲା artificial insemination ପାଇଁ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ use କରୁ sample ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି use କରୁ. ତ first statement ଠିକ ଲାଗୁଛି. Then sir Okay. second ଟା ଦେଇଛି it is a step to conserve plant-based genetic pool of the country. हाँ एमाने बनौଛନ୍ତି seed ball ସେଥିପାଇଁ ନା କି by chance ଏମାନେ ତାର ଯାହା ବି ଥିବ ଆମେ ରଖିବେ ସେଇଟା ତ ଆମର ଯାହା ବି genetic pool ଅଛି country ସେଇଟା conserve କରିବା ପାଇଁ so both would be sir right. Okay. Very good. This is one way देखो ए logic throw रे जाई कि तुम्हारा आंसर टा wrong ही जो but that is still fine. Okay. Just try to understand. Fine. Why I am saying fine means at least you are using some logic. Okay. Now एबे ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବ have you heard about Svalbard seed vault? It's the global seed vault actually. Okay. ଏଇଟା ବହୁତ ହି ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା ମେ ବି 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି ତୁମେ ଜାଣିନଥିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ स्वालबार्ड जो स्कैंडिनेवियन कंट्री रे आई थिंक नॉर्वे रे नॉर्वे और स्वीडन हाँ राइट सो तार जो पूरा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट टा रे जोटा पूरा आर्कटिक सी को लागि कि अछि सेही पार्ट टा होछि स्वालबार्ड सेठी से माने गोटा ग्लोबल सीड वॉल्ट रखछन्ती एटा को याकू भी कहते डूम्सडे सीड वॉल्ट ओके माने माने भाउचंती कि जदी वर्ल्ड केबे एपोकलिप्स की वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हे गला तथापि हमें वर्ल्ड सारा रो सब सीड को रखियो सो दैट वी कैन रीप्लांट द एंटायर अर्थ अगेन हमें सब जेनेटिक डाइवर्सिटी को कंजर्व करिया पई ओके नाउ तमे भाबो कि स्वालबार्ड रे काहे कि ई जिंसटा हितला व्हाई डिडंट वी डू दिस एट अ ट्रॉपिकल प्लेस फॉर एग्जांपल व्हाई डिडंट दे डू इट एट लेट्स से केन्या और नायरोबी और इवन लेट्स से इंडिया रो केरला रे the reason Sir, is because it is yes go nothing, sir, please, nothing. You say, sir. sir so the due to reason is humidity temperature sir. very good very low temperature this is the key why I am telling you extrapolation माने कोन देखो लॉजिक से हमें लगाया स्वालबार्ड रे जेमतिया हेतिला एक्चुअली याकू कॉपी करके इंडिया रे होची इंडियन वर्जन ता तार होची चांगला सो स्वालबार्ड रे एथपे हेतिला बिकॉज़ ऑलरेडी से वेरी लो टेंपरेचर सो सेथरे किछि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यूज करिया दरकार नाही आर्कटिक पाखरे अछि एते बरफ रे अछि तुम आर्टिफिशियल काई कर अब यार रीजन भी होची कि दिस इज डूम्सडे वॉल्ट माने केते इयर्स है मे बी 1000 इयर्स 10,000 इयर्स मिलियन इयर्स पई से चालिबो तो आमे आर्टिफिशियली गोटे पावर सोर्स लगी ठंडा करी केते वर्ष तुमे चलै पारि बुझुछ सो आमे गोटे आर्टिफिशियल जगह रे सॉरी नेचुरल जगह रे ताको प्रिजर्व कर परिया दुसरे काम बेसी एनर्जी यूज होबो नै सो सिमिलरली इंडिया भी सेते करछि चांगला रे इट इज नॉट डन इन ओडिशा और केरला बिकॉज़ केरला रे कले ओडिशा रे कले हमको गोटे बहुत बड़ा फ्रिज रखिया पड़े कंटीन्यूअसली माने नै कि 1 मिलियन इयर्स पर्यंत कंटीन्यूअसली हमें पावर सोर्स ताको जोगै पारि सो दैट मींस कि किछि भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यूज होबो ना it should be a natural technology naturally गोटे प्लेस रो very low temperature रो अछि पे this statement would be wrong okay and the second statement is a generic statement so this should create a green flag okay सीड वॉल्ट हमें सीड को प्रिजर्व करजे सीड को प्रिजर्व करिया माने कोन प्लांट बेस्ड जेनेटिक पूल को ही तो प्रिजर्व करिया ना प्लांट जीन्स को हम प्रिजर्व करू so that is second is correct so answer is 2 only so what is
Extrapolation is if you had known about Svalbard global seed world, then we extrapolate the knowledge to Indian seed world, which is at Changla. This is exactly the meaning of extrapolation. এই সব লজিক আমু লগার আছে কি যদি এই প্লেস রে গোটে ইয়া পই যাহা যাহা লজিক কাম করছি সিমিলার লজিক কাম করিয়া কথা এথিরে ওকে এটা দেখো সবুবেলে কমপ্লিটলি 100% ট্রান্সলেট হবো নাই মে বি কিছু কিছু কেস রে কোন হবো এক্স রে जो জিনিস কাম করথো ওয়াই রে সে জিনিস কাম করিব না बट ठीक আছে আমগো কোন আমগো নেট পজিটিভ মার্ক দরকার তো নেট পজিটিভ মার্কস পাই वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ लॉजिक्स बुझियो एक्स्ट्रापोलेशन कोन बुझियला बुझियो से ना नहीं और एमती मत लागु बहुत Yes, sir. हाई फाई गेला Yes, sir. Yes, sir. मझे मझे फीडबैक दो ना मत जाना पड़ियो okay so next trick is exception to the rule which rule ki extreme statements are always wrong so याको यार भी किसी किसी exception अछि so this trick is known as when extreme statements are right ठीक अछि तो बेले बेले माने नहीं कि सब बेले extreme statement माने सब बेले भूल हो बेले बेले extreme statement ठीक हो तो को केस रे तुम कंफ्यूज हे जो तुम कहयो कि सर एबे मु केमती जानिबी को केस रे ठीक हो को केस रे हबो so that is माने कोन ओवरऑल गोटे इंट्यूशन आसीयो एंड सेतरे लॉजिक भी यूज होबो इंट्यूशन भी आसीयो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि केमती लॉजिक लागी ए क्वेश्चन टा देखो स्टैंडर्ड मार्क ऑफ BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ओके फर्स्ट स्टेटमेंट कहूची कि द स्टैंडर्ड मार्क इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट AGMARK is a quality certification mark issued by Food and Agriculture Organization FAO which of the above is are correct ठीक है भाभी को कौन कौन तुमको लागु कोटा करेक्ट कोटा रॉन्ग Sir, second का sir generic statement अच्छे right लागू थे sir. okay first statement सर फास्ट टा राइट लागुची सेकंड टा रॉन्ग okay why first second की right लागु सर जनरली जो BIS ही सब दिए जो स्टार रेटिंग सेइथि बोधे फास्ट टा ठीक हबो आ सेकंड टा सर AGMARK कहउची डिपार्टमेंट माने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंडिया रो दबो एफे ओटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन okay very good ठीक है so let's try to understand which is a red flag which is a green flag first of all देखो which is standard mark of BIS is mandatory for automotive tires and tubes actually बहुत पिला कोन भाबे mandatory पई एटा को extreme बोली भाबिने तनो एटा को मार्क कर दे सने wrong बोली second दा maximum पिला actually you did not use the correct term I was looking for this term कि you would have used this term organizations remember are usually wrong usually organization देखला माने कि ए गोटे जिंसटा this is done by this organization UPSC रे एभला स्टेटमेंट आसला माने सांग सांग तुम स्केप्टिक होवार अछि एंड तुम भाबियार अछि ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ओके दिस एनजीओ दिस से माने इंडिया कहते कि ए रिपोर्ट ता बाहर करे ए ऑर्गेनाइजेशन और ए ग्रुप ए भला किछि स्टेटमेंट दिया आइतले मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन माने ही यूजुअली दैट इज रॉन्ग यूजुअली नॉट ऑलवेज सो दिस इज ए रेड फ्लैग ओके नाउ ऑर्गेनाइजेशन ए भला किछि आसले तापर तुम भाबियो कि या व्यक्तित्व भी except this organization are there any other organization which could also have or ministry or department which could also have done this thing and you will usually माने तुम immediately realize कर परिबे कि आउ एमतिया बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हो परियो जोटा कि एटा करू फॉर एग्जांपल AGMARK नाउ AGMARK को काहे कि फाओ करी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काहे करी AGMARK क्वालिटी सर्टिफिकेशन mark which is used is AGMARK in some other country US Japan तुम जानि न दी अलग बट AGMARK ता इंडिया रे ही यूज है एंड सेकंड कथा जदी भी जान एकदम जान कि इंडिया रे यूज है जदी तुमको लागछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हाउ करिवो ही बली कोन माने हाउ के भी करथै परन फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करथै पारे आईफाड करथै पारे ओके
सो दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन को चेंज ता माने कोन देखो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करिया तांक भाई बहुत ही इजी सो दिस इज अ रेड फ्लैग एंड यू शुड एलिमिनेट इट बट माय फोकस हियर इज ऑन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी स्टेटमेंट 1 रे समस्त को एक्सट्रीम लागियो वाली से माने काटी देबे बट ट्राई टू थिंक कि जो जो केस रे standard mark of VIS may be in some cases it may be optional in some cases it may be mandatory in which cases this would be mandatory किसी तो केस थियो जोथरे मैंडेटरी करथुए कैन वी से सर हां को सर जोटी सेफ्टी इन्वॉल्व थिबो बोधे सेठी मैंडेटरी वेरी हेतु गुड लाइफ सेफ्टी जोथरे इन्वॉल्व अछि सेथरे मैंडेटरी हबो ऑफ कोर्स तो एथिरे लाइफ सेफ्टी इन्वॉल्व अछि ना भाव भाव कि एबे को भी कंपनी को भी क्वालिटी रो टायर बाहर कर दबो न से गाड़ी रो कोन अवस्था हबो बहुत एक्सीडेंट माने likelihood of accident will increase so therefore it is even if it seems unlikely initially but if you think about it for some time then you will realize ki, okay it might be mandatory because it is related to life risk so here the answer is one only okay now exactly ki eta issue korchi kon korchi seta ame knowledge pasare abe jiba na our class is only focused on using logic trick skill ei sabu jinso ki use kare okay mcq solving skills so the answer would be one only this is the logic now out a statement देखो out a question देखो यूरोपियन यूनियन ऊपर ଗୋଟେ statement question କହିଛି कि यूरोपियन यूनियन और EU has not achieved which of the following first statement is adopted a common fiscal policy for its member nations second is established a common system of support third is disbanded all tariffs among its members fourth is levied common tariffs on products imported from non-members ଗୋଟେ ମିନିଟ ନିଅ ଭାବ ଭାବି କୁହ Sir, probably A, not achieved here because माने कॉमन फिस्कल पॉलिसी बहुत ब्रॉड टर्म में ये होती है कि एक मेंबर नेशन फिस्कल पॉलिसी रे चलो बहुत लाइक मूविंग पार्ट्स प्रोबेबली ओके वेरी वाइड काइंड ऑफ स्कोप तुम कहू तो एटा सबु सबु कंट्री ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ ईयू एटा को अडॉप्ट करियाटा प्रैक्टिकल नो राइट प्रैक्टिकल है यस करेक्ट ठीक है व्हाट एल्स एनीवन एल्स सर बी आंसर हबो बोधे कारण विभिन्न कंट्री रो विभिन्न एग्रीकल्चरल जोन थिबो आ विभिन्न प्रोड्यूस होथो समस्त पई तो समान सिस्टम करा जाय परिबोनी जो प्रोड्यूस रो जेमते एमएसपी माने अलगा अलगा जिंसो पई अलगा अलगा प्राइस अछि इंडिया रे ओके वेरी गुड दिस कैन बी वन ऑफ द लॉजिक्स व्हाट एल्स हाउ को डाउट होची आउ अन्य को ऑप्शन होतियो सर ऑप्शन सी मत लागुच रॉन्ग हेतो काहे कि ना ऑल टैरिफ्स को भी कोच डिसबैन कर दिया है तो टैरिफ्स तो अच्छी वाला लागुच कि इंडिया को भी रिसेंटली टैरिफ रे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टैरिफ रे ना सब रेस्ट्रिक्शन फेस करिया पे पड़थिला तो ए सी भी रॉन्ग हेथे पारे ओके सी दिस इज एक्चुअली द ट्रैप ओके एक्चुअली कोन की हमें कॉमन सब ट्रिक पढ़ी पढ़ी पिलांग माइंड रे पिला बेसी किछि भाबिबे नै एटा को कहे कि सी ऑल टैरिफ्स दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओके नाउ बट थिंक अबाउट दिस first is tariffs second is fiscal policy and third is agricultural price support मते को कि यांको भितरु कोउटा सबटु वाइडेस्ट रेंजिंग गोटे सिस्टम जोटा कि यार लॉजिक कोन देखो जोटा जत्ते वाइड रेंजिंग होबा ना सेटा सेते अनलाइकली होबो कि सब मेंबर कंट्रीज माने सेटा करे देखो हमें गोटे स्पेसिफिक बहुत ही नैरो जिंस रे वी कैन हैव अ कॉमन कंसेंसस सब कंट्री माने राजी हेबे कि हमें गोटे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऊपर गोटे कॉमन टैरिफ बसेबी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट ऊपर बसेबू नाही ओके और माने हमें हमो भितरे जो ट्रांसपोर्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट रे सपोज इंजन वीजा ओके सेटा कॉमन हे गला तो नैरो जिंस ऊपर कंसेंसस आनिवाटा इजियर गोटे जत्ते वाइडर गोटे जिंस हबो जत्ते वेरिंग गोटे जिंस हबो ता ऊपर समस्त राजी होबाटा बेसी डिफिकल्ट तो याको भितर सबटु वाइडेस्ट जिंस कोउटा
Fiscal common policy. fiscal. Excellent. Fiscal policy is the widest. Okay. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟ୍ରାପ ରେ ପଶିବ ନାହିଁ କି ଅଲ୍ଡ ଅଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବ ହିଁ ନାହିଁ କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାଟିଦବ। ନାଉ ଥିଙ୍କ ଅବାଉଟ ଇଚ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଇନ୍ ଡିଟେଲ। ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ ରେ ବି ଦେଖ ସେ କହୁଛି କମନ ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ଆଣା ହବ। ସେମାନେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ କୁ ଇଦର ଉଡେଇ ଦେବେ ଅର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ କି କଣ କର ବୋଲି। ସେମାନେ ଗୋଟେ କମନ ସିଷ୍ଟମ ବସାଣିବେ। ସେ ସିଷ୍ଟମ ରେ ତା ଭିତରେ ଡିଟେଲ ରେ ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ସେଥିରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେମିତି levied common tariffs on products imported from non-members, ଏଥିରେ ବି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। because common tariffs on products imported from non-members ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ agree କରିବାରେ କିଛି problem ବେଶୀ କିଛି ହବ ନାହିଁ, because tariff is a very narrow thing. But fiscal policy, remember, fiscal policy will range everything from taxation as well as government expenditure भी, है ना? ये सब जिनिस भाव different schemes ସେମାନେ କାହାକୁ କେତେ ଇଭେନ ପ୍ରାଇସ୍ ସପୋର୍ଟ ବି ଫାର୍ମର୍ସ କୁ କେତେ କେତେ ଦେବେ କଣ କରିବେ ସେ ସବୁ ଏମଏସପି ସବୁ ଆସିଯିବ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଅଣ୍ଡର। ତ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏଗ୍ରି କରିବେ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗ୍ରୀସ୍ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଅଲରେଡି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ସିକ୍ ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ସିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, है ना? ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀସ୍ କୁ ଆମେ ଫୋର୍ସ କରିବୁ କି ତୁମେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମେଇ ଦିଅ, ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଚାଲିଛି କି ସେମାନଙ୍କୁ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପ୍ୟାକେଜ ତାଙ୍କୁ ଦବା ଦରକାର ଟୁ କିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେୟାର ଇକୋନୋମି। So can it afford to spend very little on welfare programs? Let's say for example Germany ଏବେ କହିବ କି fiscal policy ଆମେ ମାନେ tight fiscal policy ଆମେ adopt କରିବୁ, but can Greece afford to do the same? So this will be the answer ki EU has a common monetary policy but not fiscal policy. So ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହବ, this will be the answer. Okay, he adopted a common fiscal policy for its member nations. So my point is ki sometimes extreme statements may also be correct. ଏଠି ଏମିତି all tariffs was also correct. So think ମାନେ ଆସିବ ଯେ କି ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ immediately decide କରିବାର ନାହିଁ। ନା ଗୋଟେ ସିମିଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଖିବୁ କି ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଏଇଟା କଣ କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ଲାଗିଲା। କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ମାନେ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ରଙ୍ଗ, କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ହେଲା କି ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି କରେକ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସିମିଲାର କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ବଟ୍ ଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା କି ୱାଇଲ୍ଡ ଅର ଅନହର୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ। ୱାଇଲ୍ଡ ଅର ଅନହର୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ ମାନେ କଣ କି କିଛି କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିବ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଲାଗିବ କି ମେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ହେଇନଥିବ ବଟ୍ ଲାଗିବ କି ଦିସ୍ ଇଜ ଭେରି ଅନଲାଇକଲି। ଓକେ, so let's see ki sometimes how these unlikely statements are also correct. Now देखो ଗୋଟେ question ଅଛି Lord Cornwallis ଉପରେ question। First statement ki he twice held the post of Governor General in India. Second statement is he beat Tipu Sultan in Third Anglo-Mysore War and signed the Treaty of Srirangapatnam or Seringapatam. Third is he introduced the permanent settlement system in Bengal only. Okay. Now you will read this and you tell me what do you think is correct or wrong. And these are your options. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 2 only, 3 only. Yes, anyone? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir, only three. Only 3. Okay. Which are true. Why do you think only 3? He introduced the permanent settlement system in Bengal only. ठीक है, in Bengal only. Why should this be in Bengal only? Maybe Bihar, could be Odisha also. से टाइम रे बेंगल साइड रे बिहार ओडिशा भी ଥିଲେ ना। हाँ sir. ଏଇଟା ତ rather this is very easy, rather you should eliminate 3 first. Okay, because we know कि बेंगल ओडिशा बिहार तीनटा को थिला पाक पाखरे, तो 3 को तो हमें फर्स्ट ही काटिया कथा। ओके, now 3 को काटला पर actually problem will come in these only, 1 and 2 only, 2 only. Okay, पता न होगा 3 को हमें eliminate कर दो। suppose 1 and 2 विषय हमर एते भलो आईडिया नहीं, जदी तुम जानिछ तो एटा तो then also it is fine. जदी number 2 तर जानिछ then also it is fine. Even if you don't know, when you eliminate option 3, see 1 and 2 only
correct or 2 only correct. That means what? 2 is definitely correct. Now everything depends on 1, whether statement 1 is correct or not. Okay, देखो आम सेकंड टा न जानी भी आंसर बाहरी गला कि सेकंड टा तो करेक्ट हम ही बर्तन फर्स्ट को देखिए कि ट्वाइस हेल्ड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया. नाउ दिस इज वेयर यू विल हैव डाउट्स कि ट्वाइस हेल्ड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल. एबे तुम लॉजिक कोन को कोन लॉजिक हम यूज कर परिया टू मार्क दिस करेक्ट और रॉन्ग. Sir, one is wrong, I think. व्हाई? Yes. बिकॉज़ Sir, के गवर्नर जनरल पोस्ट दुई थर होल्ड करते नहीं, राइट? yes, sir. राइट. सो दिस इज एक्चुअली द ट्रैप. ट्रैप कौन है कि नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, कि वी एक्सपेक्ट द गवर्नर जनरल्स टू होल्ड द पोस्ट वन टर्म एट अ स्ट्रेच, है ना? तो समस्त तो यूजुअली देखो 4 वर्ष पई 2 वर्ष पई 5 वर्ष पई जते भी माने लेंथ टा मैटर करेनी. टर्म टा यूजुअली गोटे टर्म थाए. गोटे टर्म जनकर एंड हला तापर आउ जने आसिले. सो एबे भाबो कि जदी लॉर्ड कॉर्नवालिस समस्या भले सिमिलर गोटे ही टर्म होल्ड करथांते ताले एटा केबे गोटे नोटवर्दी जिंस हेई न थांता कि दुई थर से होल्ड करथिले बोली. इन अदर वर्ड्स जदि गोटे बहुत ही ऑब्वियस जिंसटा को काहे कि समाने पचारी जोटा अनऑब्वियस जिंस होइतियो ताले सेटा पचारी ना. बुझी होची. इट वुड नॉट हैव बीन नोटवर्दी इफ ही हैड ओनली हेल्ड द पोस्ट वंस. जदि से वंस रु अधिका होल्ड करथिए ताले सेटा नोटवर्दी. सो इट इज लाइकली कि दिस वुड बी ट्रू. माने आमे एटा को भाबी परियो तुमे एटा भाबी परियो कि डबल ब्लफ. सो यूपीएससी माने यूपीएससी ट्राई करछि तुमको एथरा फसायको कि तमे गोटे जनरल लॉजिक पकई एटा काटी दियो कि दुई थर टा यूजुअली गवर्नर जनरल माने होल्ड करंती ना पोस्ट. ओके, बट एक्चुअली कॉर्नवालिस हैड हेल्ड द पोस्ट फॉर 2 टर्म्स. सिमिलरली भाबो दे रिवर्स स्टेटमेंट आस्तांता. रिवर्स स्टेटमेंट कोन आस्तांता? स्टेटमेंट आस्तांता कि लॉर्ड रिपन, ओके, और लेट्स से कि हां चलो लॉर्ड रिपन हैड हेल्ड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वंस, और सॉरी कॉर्नवालिस कथा भाबछि. कॉर्न एई भले क्वेश्चन से देबे कि कॉर्नवालिस हैड हेल्ड द पोस्ट वंस ओनली. ताले स्टेटमेंट रॉन्ग हितांता. बिकॉज़ तो आमे भाबिए कि वंस तो समस्त होल्ड करछन ताले एटा को काहे कि समान एम्फसाइज करिवे. जदि कि वंस करि नथिबो ताले स्टेटमेंट ता दिया हो ना, दैट विल बी नोटवर्दी. नले ते ऑब्वियस स्टेटमेंट काहे कि दिया हो. बुझियो. So this is a double bluffing that you have to counter UPSC. So first is correct, second is correct, and answer is 1 and 2. देखो एते सारा Sir, कहला पर भी आई एम नॉट डिनाइंग कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. या पर भी यदि बहुत पिला 2 ओनली मारिवे ताहले भी इट इज फाइन. माने योर आंसर वुड बी रॉन्ग बट स्टिल इट इज फाइन बिकॉज़ एटलीस्ट यू यूज सम लॉजिक. बट दिस इज अ हायर लेवल ऑफ ट्रिक. द फर्स्ट क्लास रे ट्रिक्स 1 क्लास रे बहुत ही बेसिक ट्रिक हम यूज करथि. एबे आजर क्लास रे टिके हायर लेवल यूज करू. ओके, यस sir, समन. sir, yes, sir. Sir, I just wanted to ask, let's say if the same question was asked in the newer format, as in like how many statement are correct in this question? Like Right. one only, two, Two two only, only, one three pair only, only, two none of pair the only, above, three pair only. हाँ. 3 pair only. Sir, যদি ସେନ୍ତାକରି ପଚରା ହେଇଥିତା ବେଲେ then how ମାନେ କେମିତି ଆମେ ୟୁଜ କରମୁ ଏଟା କି ଏଲିମିନେସନ ଦେଖ ଟେକ୍ନିକ ଟା? ସେତେବେଳେ ଟିକେ ନଲେଜ ୟୁଜ ହବ. ଏବେ ପୁରା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲି ଯାଅ. ଏବେ ଭାବ କି ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି. ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସପୋଜ ଦେଖି ଆମେ ଭାବିବା କି ଟ୍ୱାଇସ୍ ହେଲ୍ଡ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ ଗଭର୍ନର ଜେନେରାଲ. ଏଇ ସେମ୍ ଲଜିକ ୟୁଜ କରି କରିବା କି ୟାର ଯଦି ଟ୍ୱାଇସ୍ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଟା ୟୁଜ ହେଇନଥାନ୍ତା. ସୋ କିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ ବୋଲି ଏଟା ଦିଆଯାଇଛି. ସୋ ଲେଟ୍ସ ଆଜ୍ୟୁମ କି ଦିସ୍ ଇଜ ଅ ଗ୍ରୀନ ଫ୍ଲାଗ ଜିଏ. सेकंड है कि बेट टीपू सुल्तान इन थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टा. नाउ एटा नॉलेज बेसिस रे ही हबो. जदी एबे एबे कोन की एटा हमें थर्ड टा एलिमिनेट कर देले बोली एटा को हम न जानथि काम चली जाता. बट पेयर वाला क्वेश्चन ने आई एम नॉट डिनाइंग कि एथरे तुमको नॉलेज दरकार थी. एटा बहुत ही बेसिक सेमतिया भी जिंसडा एटा बेसिक हिस्ट्री रे तुमरो जानि कि जिंसडा हित जदी न जानथि तो माने 50 रे रही. So basically, okay, I'm at a this is also green flag or knowledge is I'm definitely correct. Third is introduce permanent settlement system in Bengal only. Bengal Odisha Bihar भी नहीं थी. So it को काटी दो red flag. Okay. So got a green flag, got a definitely correct. So that would be 2 pairs only. Okay, sir. But then problem ही था ना जब तुम्हें second statement था दो जानना. Then I'm not denying कि एबे तुमको issue था कि either 2 pairs or 3 pairs. एबे ये दुईटा ऑप्शन भितरे 50-50 रे मारी था जाले. Okay.
still my point is आउ दुईटा ऑप्शन तो काटी देई थांता ना, one pair only और no pair correct एई वाला ऑप्शन को एलिमिनेट कर देई थांता. ओके, Yes, sir. इन एनी केस हमें पेयर वाला ट्रिक भी डिस्कस करियो टिके. पेयर रे बहुत बेसी ट्रिक नहीं, बट स्टिल वी विल डिस्कस अ फ्यू थिंग्स. इंट्यूशन प्लस कैलकुलेशन नहीं माने प्रोबेबिलिटी रे पेयर वाला को अटेम्प्ट करिया, पेयर वाला को छाड़िया नहीं. पेयर वाला क्वेश्चन रे यदि तुमको गोटे दुटा स्टेटमेंट टोटली जाना नहीं, फिर भी यू विल ट्राई टू थिंक कि whether that could be रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग. एक्चुअली हमें देखो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग का को हमको 100% तो जाना थले हमें माने एमती करेक्ट और रॉन्ग मार दे. 100% जाना नहीं, जाना नथले भी रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग मानि ले हमें मानि कि चली एटा ठीक हेतो एटा भूल हेतो. सो सपोज ए वाला ऑप्शन थियो 1 2 3 4. ओके, चारटा परे तळे दिया हिची कि 1 पेयर ओनली, 2 पेयर ओनली, 3 pair only, 4 pair, all 4 pairs. Okay, this is your ABCD options. Okay, now इतने किसी भी जहाँ भी option दिया है, it doesn't matter. Suppose you think कि this is green flag, this is red flag, this is red flag, this is green flag. तो हमारे तो काम हो ही गला, 2 pairs only. So एटा को टिक मार्क करी चलिए. प्रॉब्लम केतला हो कि या तो कौन से गोटे स्टेटमेंट को तुमरा आदो आइडिया नहीं कि रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, बट स्टिल थिंक एबे कौन कॉम्बिनेशन ही परियो. ग्रीन फ्लैग इधर दुईटा ग्रीन फ्लैग देखो, जीएफ तीनटा ही पारे, गोटे आरएफ ही पारे और जीएफ दुईटा आरएफ दुईटा, राइट. ता माने कोन 3 पेयर ओनली और 2 पेयर ओनली. तले एटलीस्ट ए जो चारिटा ऑप्शन भितरु 3 आउट 2 भितरु गोटे आंसर हो, ए दुईटा तो काटी परियो. दिस इज द ट्रिक. एबे 50-50 रे नाउ इट इज आल्सो अप टू लक टू अ सर्टेन एक्सटेंट. याको भी छाड़ियार नहीं. एट द एंड गोटे गट इंस्टिंक्ट रे भाबियो कि ए स्टेटमेंट ठीक हेइथो और न हेइथो. गट इंस्टिंक्ट रे तुम भाबियो कि ओके चलो एटा रेड फ्लैग नो, सपोज ग्रीन फ्लैग, देन गो विथ 3 पेयर्स ओनली, बट छाड़ियार नहीं. बर्तमान आउ गोटे केस कोन हो, सपोज एमदिया 1 2 3 4 अछि, तुमको गोटे ही जणा अछि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग जहां भी जणा अछि. ओके, और इवन से कि दुईटा ही जणा अछि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग जहां भी हो, आउ दुईटा टोटली आइडिया नहीं. एई वाला क्वेश्चन इफ यू वांट यू कैन लीव. ओके, बिकॉज़ एथरे 50-50 भी होबो नहीं. बुझी होची एबे एथरु 50-50 केमतिया करियो. एथरु 50-50 होबो एठी माने 1/3 काइंड ऑफ तुमको आइडिया रही ऑप्शन रे एबीसीडी के. हार्डली तुम गोटे ऑप्शन को एलिमिनेट करते. तो से भलिया क्वेश्चन आ तुमको अटेम्प्ट करियार नहीं, लीव. बट मो हिसाब रे एते भी माने एते भी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आसीबनी कि तुम स्टेटमेंट रे भी रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जणा पड़ू नहीं. ओके, सो दिस इज पेयर वाला क्वेश्चन रो ऑप्शन रो ट्रिक. हमें पेयर वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करियो. दैट इज फॉर द माने दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी. एबे हमें मिड लेवल डिफिकल्टी रे जाउ. So I'll share this document obviously after this class, then you can go through these examples. एबे ए क्वेश्चन टा देखो. With reference to British colonial rule in India, consider the following statements. First, Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of the system of indentured labor. Second is, in Lord Chelmsford's war conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War. Third statement, consequent upon breaking the salt law by Indian people, Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. Which of the following are correct? 2019 और 20 रो क्वेश्चन है. ठीक है, भापा भापी को One that green flag is the first option of फर्स्ट ऑप्शन दा ग्रीन फ्लैग. green flag lagu sir, because ओके, व्हाई? माने indentured labor abolish करिवा पई it is माने generally sir माने something bad he is trying Very to good. abolish it. तो से अच्छा हिसाब सेटा नो आ गोटे कथा भाबो, can anyone prove that Mahatma Gandhi was not instrumental in abolition of indentured labor? Means महात्मा गांधी एते सारा काम करिथिले, indentured laborers तो पई भी से काम करथिबे. से जे काम टोटली करि नथले, यार प्रूफ के बाहर करियो कि ना से तो टोटली किछि करि ना ता ऊपर एटा को प्रूफ करियाटा डिफिकल्ट कि नहीं. दिस इज रादर Yes, sir. इजियर टू से कि ही वाज इंस्ट्रूमेंटल. ओके, so from that angle also it seems a green flag कि ऐसे किसी ना किसी करि. एंड सेकंड कथा भाबो कि एटा बहुत जेनेरिक स्टेटमेंट. He was instrumental in abolition of system of indentured labor. Very generic. Hate ये करते. Okay, so this is green flag, right? Second statement,
सर सेकंड टा भूल लागुची कारण महात्मा गांधी सपोर्ट करथुले कि इंडियन माने वार रे जांतु देन हमको डोमिनियन स्टेटस मिलियो बोली तो सेकंड टा भूल लागु सर। Okay. Again, see, you are using knowledge. So we are not running after knowledge here. We are just think what could be the logic. Suppose तुम जानी छोड़ी जानी नो it's different matter. Because knowledge basis रे हमें discuss करी तो content वाला class है तो इतने हमें तो trick ही discuss करें कुछ point. Here we are discussing. Suppose you don't know. Exam रे तो maximum 70 question around आसे जो किसी जाना नहीं और बहुत basic जिनिस जाना थी. Okay. Exact answer कौन जाना नहीं. So सेथरे हमें कौन use करिए logic. Anyone? Elora? Asis? यार logic कौन है इधर? ये भी लॉजिक लगे हवा कि सर to 3 not support माने नेगेटिव ईयर जाउच गांधी जी मैक्सिमम सपोर्ट देइथिले ऐसा बोले Okay. Okay. सर Yes, someone 3 टा else? ग्रीन फ्लैग लागुची 3 टा 3 टा कौन लाउची? Green flag. सर ये okay. Yes, Elora? सर थ्रीटा କୁହ। ବୋଧେ ସାର୍ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ କାହିଁକି ନା ସଲ୍ଟ ଲ ପରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ କେତେ ନେଗୋସିଏସନ ହେଇଛି ଯୋଉ କଲୋନିଆଲ ରୁଲରଙ୍କର। ଓକେ ତ ନେଗୋସିଏସନ ହବା ସାଙ୍ଗରେ ଇଲିଗାଲ ହବାର କିଛି ଇଲିଗାଲ सर କଲା आई ପରେ थिंक ବି बिकॉज महात्मा गांधी जाइकिना फर्स्ट ब्रेक करथिले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इलीगल डिक्लेयर करवाटा आई एम नॉट श्योर सर का हला जे माने आईएनसी करि पारे तो मो मतरे ग्रीन फ्लैग ही होगा कहीं ना तार जो इंडियन पीपल सॉर्ट ला हितला तापरे मे बी इलीगल ही थाई पारे डिक्लेरेशन कर दे पारे इशू ने ओके रिमेंबर यू सी तीनटा मास मूवमेंट ग्रेट मूवमेंट जोटा इंडिया रो कोन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट इंटेंसिटी रे एनसीएम रिलेटिवली लेस थिला हायर इंटेंसिटी थिला सीडीएम सबटु हाईएस्ट इंटेंसिटी थिला क्यूआईएम सो क्यूआईएम रे तो पूरा समस्त अरेस्ट करने आला ब्लडी अगस्त और अगस्त रिवॉल्यूशन और ब्लडी रिवॉल्यूशन भी कहा सीडीएम भी बहुत इंटेंस था एनसीएम रिलेटिवली माने एनसीएम रो फर्स्ट स्टार्ट हला दैट वाज द फर्स्ट ग्रेट माने फर्स्ट मास मूवमेंट राइट सो एनसीएम रे बैन हितला कि नहीं मोर मन नहीं मे बी एनसीएम रे भी हिता आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली चेक कर दो बट आई नो फॉर श्योर कि सीडीएम और क्यूआईएम रो तो ही हितला बिकॉज़ सताळको माने एटा कोन पूरा इंग्रेज शासन को हले देथिला अब जदि सीडीएम क्यूआईएम पर भी जदि सेमाने कांग्रेस को बैन न करी इलीगल बोली डिक्लेयर न करिवे ताले छोट छोट रिवोल्यूशन ने छोट छोट जो प्रोटेस्ट तो करियार पॉइंट ही किछि नै तामान तो एई वाला स्टेटमेंट आसियार लॉजिक ही किछि नै इलीगल हो बोली तो करी तो थिबे निश्चय सीडीएम क्यूआईएम पर दिस इज द लॉजिक ओके एंड एक्चुअली सीडीएम पर कराइतला कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कराइ सो दिस इज द लॉजिक की ओके चलो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट first statement is also a green flag because I am discussing but then entire your answer depends on this statement okay so 3 is correct 1 is correct so he pari kon 1 and 3 only 1 2 and 3 only now it depends ki whether 2 is correct or not now this is where I want to you to focus ki dekho in Lord Chelmsford's war conference Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for world war मतलब एथरे हमको काउंटर इंट्यूटिव लॉजिक लगाया पड़े बिकॉज गोटे काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट दिया जायछि इंट्यूटिव स्टेटमेंट दिया जायछि इंट्यूटिव स्टेटमेंट कोन ना वार कॉन्फ्रेंस रे यूपीएससी एक्सपेक्ट हम करूछि कि बिकॉज वी एसोसिएट गांधी जी विथ नॉन वायलेंस सो नॉन वायलेंट लोक तुमे भाबियो कि नॉन वायलेंट लोक से काहे कि चाहिबे कि इंडियन मान को रिक्रूट करा जाऊ बोली सो सेति पे आखि बुझी कि बहुत पिला माने एटा को काटि देबे सेकंड स्टेटमेंट बट थिंक अबाउट अनदर थिंग गांधी जी आल्सो supported the British during the World War. So British मान को World War दुईटा को World War टाइम पे से सपोर्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेलू तो सी इंडिया आसे नथले इट्स सेपरेट थिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर बेलू से सपोर्ट करते हैं ओके व्हाई बिकॉज़ ही अंडरस्टूड कि the opposite party जोटा नाजीज एंड फासिस्ट दे आर फार वर्स देन ब्रिटिश एंड सेमाने यदि पावर को आसी गले ताले डेमोक्रेसी ही रहिबा
So because he was supportive, that means he would also have supported recruitment of Indians for the World War. Okay, this is the logic. तो हमको counter intuitive logic लगेगी एटा को भी याकू wrong बोली माने पड़ियो. Okay, he did not support me, actually he had supported. So statement 2 would be wrong. Finally our answer would be 1 and 3 only. This is the logic. बुझियो जी. So these are the eta को trick under जाउची wildly unheard of statements which are counter intuitive but true. So हमें डिस्कस करछु एबे सेही वाला ट्रिक यूज करिया कि बेले बेले स्टेटमेंट टा काउंटर इंटुइटिव लागे. काउंटर इंटुइटिव माने हमर इंटुइशन जहा कहूची ता अगेंस्ट जिवो, बट यू हैव टू थिंक कि टिके डीपली थिंक कले ही तमे यारो लॉजिक टा पाइबे. ओके, जदि सरफेस लेवल लॉजिक कोन गांधीजी नॉन वायलेंस तो पिलाने एटा को करेक्ट बोली मानने, but deep level le kono he supported British during Second World War. So if you think about this thing, then you will know that this is not correct. Okay, now ame already kichi previous question ne ei trick ta ko discuss kari sari chu, but I want to mane eta ko ଗୋଟେ separate trick हिसाब रे ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମକୁ ବୁଝ. तो ये separate trick कोन cannot or does not, that is negatively worded statement. Okay. So यार trick कोन, try to understand. So see this question. What is or are unique about Kharai camel, a breed found in India? First statement is it is capable of swimming up to 3 kilometers in sea water. Second is it survives by grazing on mangroves. Third is it lives in the wild and cannot be domesticated. What is the answer? Sir, two तो माने write out red flag लगुची sir, because mangroves camel माने mangroves Okay. तो से जगह रहे बे जिनो rainfall टिके बेसी रही पारबा, so we Okay. can maybe eliminate that. What else? Okay, Sir, let's say कि you're saying sir, green flag. red flag sir laguchi. Red flag sir, And be red domesticated. flag sir, grazing on mangroves. Grazing on mangroves, red flag someone is saying. Okay, why red flag? Camel संगरे हमें mangrove को usually associate करू ना, right? Camel is a Yes sir, desert animal. yes sir. Desert Okay, animal. very Mangroves are like high rainfall areas. okay. Yes. ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ କଣ third statement was Third saying is a something. red flag sir. Why? Sir ଲେଖା ହେଇଛି it cannot be domesticated. जो it lives in the wild and cannot be domesticated. So it is a red flag sir. Okay. So cannot be domesticated काहे की by the way? What is the reason? Cannot be domesticated माने Sir पुणी sir ଏଠି ଆସିଯିବ knowledge ସେ ଯୋଉ sir ମୁଁ sir I will refrain. କାରଣ ସେଠିକାର ଟ୍ରାଇବ ଅଛି ନା, ଯେ ଟ୍ରାଇବ ଅଛି ସେ ଏରିଆର, ତ ଏଇଟା Okay. ଖରାଇ ହେଲା ସଲ୍ଟ, ଖରାଇ ସେମିତିରେ ବି ସଲ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କୁ ମାଲଦାରୀ ଟ୍ରାଇବ sir exactly. Okay. Knowledge base. ठीक है. Knowledge. तो बहुत जितना knowledge basis रे जानता. See, it is better for you. You know that it is good. Hello But sir, we are I think discussing about this. hello sir. सर नॉलेज तो हाँ, नहीं है हाँ. सर, बट हेई पारे डोमेस्टिकेटेड हेई थाई पारे, तो कैन नॉट ता रेड फ्लैग ही हो. Yes. Okay. First statement. What about first statement? जेनेरिक सर. Okay. Generally. ठीक है. जाना नहीं. Red flag और green flag जाना नहीं. Yes. Ashish, you are saying something. सर थर्ड ता रेड फ्लैग ही हो, मे बी डोमेस्टिकेटेड हो जाएगा ना कैमल ता हुए चलिए. Okay. सेकंड ता ग्रीन फ्लैग लागुच कहीं ना जदि से माने प्राइमरी फूड नहीं थाई पारंती कही हबनी, बट हां मे बी टू, तो 1 and 2 हेई पारे. एथरा आमे आ गोटे परे भी गोटे ट्रिक अछि एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी माने वर्ड, ओरिजिन ऑफ वर्ड. ओके, आमे वर्ड को एनालिसिस करके विल ट्राई टू फर्स्ट खराई काम है. खराई और खाराई. बतन भाबो कि यार नाम रो माने कोन किछ गोटे थिबो कि खाराई कोन ही थाई पारे. खारा प्लस ई. खारा माने कोन? सर लुणिया, सॉल्टी. Salty, right? So kharai camel माने salty camel, that means something which is related to sea water. तो हेई पारे एई camel टा गोटे एमितिया एरिया रे थिबो जोथरे डेजर्ट भी थिबो. सी camel तो यूजुअली डेजर्ट रे रहନ୍ତି. डेजर्ट और जोटा को हम को वुडलैंड टाइप रो जोटा थिबो.
तो मे बी बट बहुत जगह कौन डेजर्ट टा एंड ही तो सी रे, तो सेई जगह रे भी रही परिबे ना कैमल, दैट इज ए इंटरसेक्शन एरिया। असुविधा कौन, डेजर्ट एंड होची सी अछि, एथरे अल्प किछि मैंग्रोव भी एथे थाई पारे, देयर इज नो इशू। एक्चुअली रन ऑफ कच्छ इफ यू सी, दिस इज वन ऑफ दोज एरियाज व्हिच हैज डेजर्ट, डेजर्ट तो कहया नहीं, सॉल्ट पैन, वाइल्ड माने वाइड एरिया रो सॉल्ट पैन अछि व्हिच एंड्स इन द सी, राइट। सो ए एरिया रे ताले ही असुविधा कौन, सो खारा ई कैमल, सो मैंग्रोव भी थाई पारे एंड सी वाटर रे भी थाई पारे। बर्तन जदि गोटे स्पीसीज गोटे सी वाटर पाखे रहउछ, इट इज वेरी नेचुरल दैट इट विल इवॉल्व टू माने अडैप्ट टू दैट सिचुएशन। फॉर एग्जांपल जेमति आमे भाबो कि गोटे होची जो हमर कोन सेटा ईस्टर्न घाट रे जो गोटे बिलेटा देखा कोन सेटा कोन माने पड़नी, गोटे छोट स्मॉल साइज गोटे कैट टा अछि, ओके, वाइल्ड कैट, हाँ फिशिंग कैट। नाउ दिस इज ए वाइल्ड कैट, आम डोमेस्टिकेटेड कैट थोर एटा डिफरेंट ना। फिशिंग कैट नाम रु ही एगेन देखो एटिमोलॉजी, नाम रु ही लागु कि एटा फिशिंग करथो, फिश करथो, तो ता माने कोन जदी या ऊपर गोटे क्वेश्चन आसे कि फिशिंग कैट कैन स्विम, ऑब्वियसली इट शुड बी एबल टू स्विम। जदी तार नाम फिशिंग कैट हेची ता माने से फिशिंग करूची, ता माने से स्विम कर परथो, राइट। सो सिमिलरली जदी गोटे कैमल टार नाम ही खाराई कैमल, खारा माने सॉल्ट वाटर पाखरे अछि, ताले सी वाटर पाखरे रहथो, सी वाटर पाखरे रहथले स्विम कर परथो। पुनी गोटे जेनेरिक स्टेटमेंट देछि अप टू माने केही कहउनांती सडनली कि ओनली ओनली विद इन 3 किलोमीटर जाई परियो, सो कहउन अप टू 3 किलोमीटर माने गोटे सर्टेन शैलो लेवल रो वाटर पर्यंत से जाई परियो। केही तो कहउनांती कि से स्विम करिकि इंडिया रो जाई पहुंचियो सऊदी अरेबिया रे, सेमाने कहउछन्ती सर्टेन एरिया ऑफ शैलो वाटर रे से स्विम कर परियो, सो इट कुड बी करेक्ट। सो सेही सेम रीजन रो आमे यदि देखिया कि सेही जगह रे से बॉडी थिवो, मैंग्रोव्स भी थिवो, दैट कुड आल्सो बी करेक्ट। Third statement, now focus on this thing. Etymology is another trick that we are going to study next. Third statement is the statement which you should focus on. It is saying कि it lives in the wild and cannot be domesticated. एबे भाबो कि से कहूची कि cannot be domesticated. How does it know for sure कि it cannot be domesticated? ए भलिया कोन गोटे एनिमल तुम्हारे नाम को जोटा को आज पर्यंत डोमेस्टिकेट करा जाई पारने। यार टाइगर को भी डोमेस्टिकेट कर दिया होची, लोक माने टाइगर रखछंती। माइक टाइसन गोटे टाइगर को डोमेस्टिकेट करके रखिथिला। मयूरभंज रे गोटे खैरी और समथिंग, यस खैरी वाली गोटे टाइगर थिला, सेठिकार फॉरेस्ट ऑफिसर जने से रखिथिले। से जदी टाइगर को डोमेस्टिकेट करा जाई पारुची, खराई कैमल को डोमेस्टिकेट कहीं करा जाई परिबनी। पुनी सपोज आ गोटे कथा भाबो, सपोज एबे हेटा को डोमेस्टिकेट करा जाई पारु नाही, मे बी 2-3 वर्ष परे जाना पड़ियो कि सेठिकार से गोटे ट्राइब अछंती, समाने लास्ट 10 वर्ष धरि ताको डोमेस्टिकेट करिया ट्राई करि आछन, इवन फाइनली दे आर सक्सेसफुल। एबे समाने गोटे पॉपुलेशन ऑफ खराई कैमल अछि जोटा को डोमेस्टिकेट कर दैछन। बतन यूपीएससी रा आंसर चेंज हे गला। तुम बळ किछि पिला माने कोन करिवे, जो मनकर क्लियर ही तो बहुत खुशी, जो पिला क्लियर न करथि से माने एबे सुप्रीम कोर्ट रे केस फाइल करबे कि सो यूपीएससी रा आंसर की रॉन्ग अछि, एबे देखन एबे तो डोमेस्टिकेट ही पर। सो ए स्टेटमेंट तमन दिस इज अ रेड फ्लैग, ओके, दिस इज नॉट अ ग्रीन फ्लैग। सो दैट मींस आंसर शुड बी 1 and 2 ओनली। जदि भाबो ए दुइटा आंसर, ए दुइटा ऑप्शन भी एते डीपली भाबी न थांतो, स्टिल ओनली यू न्यू दिस ट्रिक कि कैन नॉट एंड डज नॉट, सी कैन नॉट एंड डज नॉट इज यूजुअली रॉन्ग, ए वाला स्टेटमेंट यूजुअली रॉन्ग था। दिस इज द ट्रिक, ट्रिक नंबर 7। जदि ए ट्रिक यूज करियो, थर्ड स्टेटमेंट थर्ड ऑप्शन को काटी दे थांतो, ताले एमती भी मोर आंसर आसी था 1 and 2। ऑल्दो आई विल टेल कि एग्जाम रे कना गोटे सिंगल स्टेटमेंट को काटी की आंसर ता भाबिबो नाही, यू थिंक ऑफ ऑल द ऑप्शंस एंड यू थिंक ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस, ओके, कोथरे तुमको बेसी लागुची करेक्ट हबार चांसेस अछि, ओके। सो कैन नॉट एंड डज नॉट रो एटा हला ट्रिक खराई कैमल। Now it would be easier for you to solve this. Consider the following statements regarding rusty spotted cat. First statement is it is a small sized cat. Second is it is found in both India and Sri Lanka. Third is it cannot hunt on its own and solely depends on scavenging carcasses. Viko, what is the answer? Third red flag, sir. Very good. So by So, default I need to only answer it. so third काटे देले एमती भी आंसर आसी होची, ओके। बतन तुम भाबो कि it cannot hunt on its own, rusty spotted cat cannot hunt on its own। अच्छा आ गोटे कथा भाबो, rusty spotted cat जदि गोटे क्वेश्चन आसीची प्रोबेबली गोटे वाइल्ड स्पीसीज हितो। एबे तो डोमेस्टिक स्पीसीज माने पिजियन ऊपर थोड़ी ना यूपीएससी को क्वेश्चन पचारची, ओके। देखो क्वेश्चन ही पचारे छी फिशिंग कैट ऊपर, क्वेश्चन पचारा जाय नहीं नॉर्मल कैट ऊपर।
सो गोटे यूजुअली आमे भाबी कि एटा गोटे वाइल्ड स्पीसीज ही तो वाइल्ड स्पीसीज जदी हिथियो हाउ कैन इट नॉट हंट ऑन इट्स ओन जदी गोटे वाइल्ड स्पीसीज हंट न करिवो त से एक्सटिंक्ट ही राइट सेकंड कथा हला सोलली डिपेंड्स ऑन स्कैवेंजिंग कार्कासेस की जाय कि चेक करछि कि डेली सब कैट मान को ई रस्टी स्पॉटेड कैट मान को चेक करी कहछि कि समान केवल कार्कास को स्कैवेंजिंग करंती कि दे आर स्कैवेंजर्स ओनली देन समान हंट केबे करंती नाही कि एटा चेक करी होई परियो फॉर श्योर so it is very likely that this statement would be wrong okay so third यदि एलिमिनेट कर दो आंसर बाहरी वाला in any case ये दुईटा स्टेटमेंट भी देखो this is a generic statement this is also a generic statement found in both India and Sri Lanka जदि रादर स्टेटमेंट आस्थांता कि फाउंड ओनली इन इंडिया ताले एटा को हमें काटथांदे एक्सटेंड स्टेटमेंट भाबी बट इंडिया एंड श्रीलंका कहछि त हिथियो श्रीलंका रे नाहंती बोली कि प्रूफ करियो जदि भाबो आज श्रीलंका रे नाही काली गोटे को श्रीलंका रो गोटे डीप जंगल भितरे गोटे बाहरी गला डिस्कवर हेला रस्टी स्पॉटेड कैट यूपीएससी रो आंसर की भूल हेगला तापर तुम जाई कि केस करियो कि यूपीएससी काई भूल क्वेश्चन सेट करछि सो बुझी होछि लॉजिक बुझी होछि yes sir राइट सो एई भला भाबो एई भला क्वेश्चन सपोज आ गोटे क्वेश्चन एबे भाबो एनवायरनमेंट रे भला क्वेश्चन भाबो आर्ट एंड कल्चर रे गोटे क्वेश्चन आसीओ ओके कि लेट्स से कि इंडियन टेंपल्स ऊपर गोटे क्वेश्चन आसी सपोज कहछि इंडियन टेंपल्स आर्किटेक्चर ऊपर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू टॉक अबाउट दीस स्टेटमेंट्स गोटे स्टेटमेंट अछि कि इंडियन टेंपल्स रे यूजुअली नॉन हिंदू मोटिव्स यूज करा जाई नाही ओके नॉन हिंदू मोटिव्स लेट्स से कि मोटिव्स मान बुझ परछो जेमति किछि गोटे सिंबल ओके किछि गोटे फिगर फिगर और फिगरिंग so non-Hindu motifs are not used let's say गोटे बहुत स्पेसिफिक टेंपल ऊपर क्वाइज कि ए टेंपल रे नॉन हिंदू मोटिव्स यूज करा दे नाही कि नॉन हिंदू मोटिव तो नाही टोटल नाउ यू थिंक कि ए स्टेटमेंट को करेक्ट जदी ही थांदा या प्रूव करियाटा बहुत डिफिकल्ट बिकॉज़ ता माने कोन आमे सब टेंपल ले जाई कि सब टेंपल लो सब मोटिव को चेक करी कि फाइनली गोटे रिपोर्ट बारियो कि हां इट्स तो नॉन हिंदू मोटिव नाही कथा नॉन हिंदू मोटिव बुद्धिस्ट मोटिव भी ही पारे जैन मोटिव भी ही पारे जैन मोटिव गोटे टेंपल ले यूज होवार आश्चर्य किछ नाही बिकॉज आमे गोटे सिमिलर कल्चर रे डेवलप हिची एटा तो एटा को प्रूव करियाटा तो बहुत डिफिकल्ट ना कि यूज ही हेई नाही प्लस भाबो आज पर्यंत किछ भी डिस्कवर हेई नाही काली गोटे टेंपल लो को गोटे कॉर्नर रे गोटे मोटिव बाहर जो नॉन हिंदू मोटिव नाउ योर स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग सो दैट मींस कि ए स्टेटमेंट यूजुअली ए वाला स्टेटमेंट आसले नॉट यूज्ड बुझपाछो नेगेटिवली वर्डेड स्टेटमेंट you should be very very keenly aware कि negatively worded statement would usually wrong है okay does not cannot ए वाला statement असले you should be very aware कि probably it would be wrong बुझिए हो okay next is this thing etymology or word play next 8th number trick हला word play माने origin of word को हमें नहीं की we'll try to understand कि how this word is linked to the options. Now the question is, in 1920, which of the following changed its name to Swarajya Sabha? And your options are All India Home Rule League, Hindu Mahasabha, South Indian Liberal Federation, Servants of India Society. Without using knowledge, on the basis of trick or logic, you tell me what should be the answer. सर स्वराज्यर इंग्लिश ट्रांसलेशन होची होम रूल सेति ऑल इंडिया होम रूल Very good, excellent. That means कि see, स्वराज्य स्वराज्य है ना स्वराज्य means self rule or home rule. Now the Hindu Mahasabha, South Indian Liberal Federation, Servants of India Society, none of these are linking to self rule or home rule or Swarajya. The only option that is linking is this thing, home rule league. So even if you didn't know what is the answer from this, you can guess. This is etymology, word play. Now it's a very easy question thila. How टिक्के difficult question हमें देखिए. This is also one of the questions I think 2014 or 15 asked. Which of the following is the best description of INS Astradharini that was in news recently? Amphibious warfare ship, nuclear powered submarine, torpedo launch and recovery vessel, or nuclear powered aircraft carrier? INS Astradharini.
सर सर इधर टॉर्पेडो बी और लॉन्च सी तो सर नहीं हुए एलिमिनेट ही हुआ सी एंड कौन कहला कोटा एलिमिनेट होगा सर बी और डी बिकॉज ओके one is a nuclear powered और nuclear powered দিটা মানে এটা অস্ত্র ধারিণী as in like weapon bearing তো এମାନେ তো କିଛି वेरी गुड ଲେଖା ନାହିଁ ସେମ ତ ବी ଆଉ ଡି ଏଲିମିନେଟ ହେଇଯିବା ଟର୍ପିଡୋ ଆଉ warfare ship ଭିତରେ most probably A ହେବ because it is not a recovery মানে option C টা recovery vessel also torpedo launch and recovery vessel so probably वेरी गुड amphibious एनीवन एल्स एनी अदर लॉजिक now I think we'll approach this with different logic okay first logic is correct astra plus dharini you go with the word play astra means some kind of weapon and it is dharini means it bears that weapon or carries that weapon so that means it should be some kind of vessel or some kind of ship that is carrying something else some kind of weapon now I think amphibious warfare ship it doesn't tell you ki what kind of weapon it is carrying nuclear powered submarine we don't know what weapon it is carrying nuclear powered aircraft carrier theek hai aircraft carrier might it is carrying aircraft now this can be a weapon I'm not denying it torpedo launch and recovery itself is saying ki something related to weapon this weapon is explicitly mentioned that is torpedo so now we can say ki maybe C or D one of them would be the answer now you think about another thing ebe ame kon kariya ebe out ki extrapolation use kariya just to be sure okay now you think extrapolation means what we will use from X to Y existing knowledge to current situation amphibious warfare ship have you heard of any amphibious warfare ship how many such amphibious warfare ship does India have I don't know and I haven't heard about any such ship jahar naam bahut news re achi recent okay let's say we don't know about this second statement nuclear powered submarine nuclear powered submarine usually you would know the submarines how are submarines named in India submarines in India are named after you would know the sea fish marine fishes okay kalvari khanderi khanjar okay vela vela or sorry vega not vela vega vega bhagshir do you know this or not these are all different names of fishes या बेसिस रे ही हमारे हमें सबमरीन नो नाम दे सो अस्त्र धारिणी तो केबे ही नथियो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देखो जहां भी सिस्टम ही थियो ना नेमिंग सिस्टम you can use this for extrapolation okay so INS अस्त्र धारिणी cannot be a nuclear powered submarine okay और एमदिया ହେଇଥିବ कि देखो सिमिलरली एयरक्राफ्ट कैरियर रो नाम केमदिया दिया जाए INS विक्रांत INS विराट है ना वीर हम सब नाम दे not अस्त्र धारिणी kind of thing so both of these if you eliminate both of these again we are coming to this thing देखो এই দুইটা লজিক ଆମେ ଯେତେବେଳେ word play ଆଉ extrapolation use କଲୁ finally ଗୋଟେ common ଜିନିଷ ଆସୁଛି torpedo launched recovery vessel okay? so finally your answer would be this C ବୁଝି ହଉଛି କଣ କହୁଛି in any case this option you can eliminate because this is not talking about any specific astra or weapon it is only talking about amphibious warfare ship only C is the option that is talking about C and D they are talking about any weapon and D you can eliminate because using extrapolation aircraft carriers are named as like this Vikrant and Virat in any case aircraft carrier is a very huge thing India currently has only one operational aircraft carrier ଆଗରୁ ଆମର ବୋଧେ ବିକ୍ରାନ୍ତ or something ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ରଷିଆରୁ ଗୋଟେ ଆମେ ମଗେଇକି ସେଟା ଚଲଉଥିଲୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସଲି ଡେଭଲପ ଆମେ କରୁଛୁ ଓକେ ସେଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଇଛି so ଏଇଟା this is a huge thing and ଯଦି aircraft carrier ହେଇଥାନ୍ତା ଏଟା ବହୁତ ହି ବେଶୀ news ରେ ଥାନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ relatively less heard of name ହେଇନଥାନ୍ତା okay that is the logic now you tell me which of the following is or are famous for sun temples use the logic word play हर्षावली अमरकंटक ओंकारेश्वर सर ओमकारेश्वर शिवଙ୍କ ନାଁ ତେଣୁ 3 ଏଲିମିନେଟ କଲେ 1 ଆନ୍ସର very good excellent
See, I wanted you to use this logic only. Very simple logic. Omkareshwar, what a place no naam hi, probably related to a very famous temple. If that temple is there, Omkareshwar means Om is related to Shiva. So it would be a Shiva temple. It will not be a sun temple. So if you eliminate 3, then you immediately get the answer 1 only. Okay? You don't even need to know about these 2 things, Arsavali and Amarkantak. Actually, Arsavali re gote achi, Amarkantak or Omkareshwar. Okay. So answer is 1 only. Okay. Now we have some more time to discuss one more trick. Actually, I didn't get time to add this, but we can continue. That extra trick is known as superfluous words. Eta कितना number trick थी? 8 number trick थी बोले. So 9 number trick. Let's discuss this one also because I will not get much time. So आज time also we will discuss superfluous words. What do we mean by superfluous words? Superfluous words are words which do not have value in themselves. Okay. So whenever in a statement you have superfluous words, it is likely to be wrong. This is the trick. Now let's take an example. The example is, there was a previous year question. Consider the following statements with respect to barren island volcano and its volcano. Now the statements were, first is ki this barren island volcano is an active one in Indian territory. Second statement is, this barren island lies 140 kilometer east of Great Nicobar Island. Third statement is, the last time this barren island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. Okay, and your options are 1 only, 2 and 3 only, 3 only, 1 and 3 only. Now you tell me what could be the logic. Let's discuss one statement after another. First statement, tell me, is it a red flag or a green flag? Barren Island volcano is an active volcano in the Indian territory. हाँ सर ग्रीन फ्लैग है अपना ओनली एक्टिव volcano तो barren है. Yes. Actually, Barren Island volcano is the only active volcano in Indian territory. Okay. Amaro gotte hi volcano achi, that is Barren Island. Suppose you don't even know this, you can use another trick. What is the other trick? See, most of the volcanoes in India currently, जहाँ भी अच्छी, बहुत फर्स्ट कथा वाला बहुत ही कम अच्छी, जहाँ भी अच्छी, those are all inactive. So this is the standard or this is the norm. तो किसी गोटे नोटवर्दी केतेବେଳେ हबो जेतेବେଳେ एक्टिव हबो सेतेବେଳେ ही किसी गोटे नोटवर्दी हबो ना, then only we will discuss about it. जेमति हम डिस्कस करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस, if he had only held the post of governor general once only, one term only, then it would not have been the news. जदि twice or more than one term କରିଥିଲେ ही न्यूज रे थिबे, सेतमे से स्टेटमेंट टा काउंटर इंट्यूटिव हेले भी करेक्ट. सो सेम लॉजिक यू कैन अप्लाई कि एक्टिव हेथिबो बोली ही न्यूज रे थिबो, इनएक्टिव हेथिले न्यूज रे काहे थिता और काहे कि हम डिस्कस करथान. So this is a green flag. Okay. What about second statement? Barren Island lies 140 kilometer east of Great Nicobar Island. Logic? I don't know sir, red flag लाଗୁଛି बाकी बहुत specific माने 140 किलोमीटर पूरा एमती too specific ଦେଇଛି. Figures. This is the important part. It is using figures. 140 kilometer and second figure is east. ହେଇପାରେ east ନ ହେଇକି west ହେଇପାରେ, north ହେଇପାରେ, south ହେଇପାରେ. पुणी east of Great Nicobar Island. Exactly Great Nicobar Island ରୁ ଏତିକି କିଲୋମିଟର east ଅଛି, west ଅଛି, north ଅଛି.
See, this statement is very easy to change. That is the red flag. It can be very easy to change. Maybe it could be 100 kilometer east of Great Nicobar Island. Maybe it could be 30 kilometer west of Great Nicobar Island. Maybe it could be 140 kilometer east of not Nicobar Island but Sentinelese Island. So that means why would they give you the exact statement? So it seems like a red flag. See, all we don't know what is correct or wrong. We are assuming only. Okay. So we are assuming this is probably unlikely to be correct. Third statement. Now focus on third statement. The last time Barren Island volcano erupted was in 1991, and it has remained inactive since then. What do you think? easy to change মানে ইয়ার কত ইজিলি চেঞ্জ হয়ে পারবো স্যার Very good. One is easy to change. Island What else? sir हमने first का तो हमें लिखी तो कि we are taken it as a green flag is an active one in Indian तो यदि 3 के हमें মানে green flag कर दम तो first statement की contradict करियो Very good. I wanted you to understand this thing also. We have already discussed one trick, which is mutual compatibility or incompatibility. Remember, options should be mutually compatible or it should not be mutually incompatible. If that is mutually compatible, then it is likely that both statements are correct. If there is mutual incompatibility, that means one is correct, one is wrong. है ना? ता माने कौन देखो सपोज तुमको जाना नहीं सपोज क्वेश्चन अच्छी कि सन आउ अर्थ भितर डिस्टेंस केते ओके गोटे स्टेटमेंट अच्छी कि सन आउ अर्थ भितर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज अनदर ऑप्शन होची कि वेरी स्मॉल थर्ड ऑप्शन होची कि मीडियम तापर ऑप्शन तुमको क्वेश्चन दिया है कि वन ओनली टू ओनली वन एंड टू ओनली थ्री ओनली now see if you don't know anything about what is the distance you can blindly say कि one and two only तो एक संग रही परिवेन very large and very small एक संग रही क्या बुझियो it would be either very large or it would be very small or it would be medium it cannot be simultaneously very large or very small that means what these two options are mutually incompatible so mutually incompatible means you can eliminate these two this option you can eliminate similarly think first statement it is saying the island barren island volcano is an active volcano third statement is saying ki it is inactive so that means 1 and 3 simultaneously cannot be correct that means one of them would be correct then the other would be wrong so either one correct and 3 wrong or 3 correct and 1 wrong now first statement we said ki this seems like a green flag and so that means if this is green flag it is likely to be red flag now you can approach this in another way also and this is what I want you to focus on you observe this part. Now, in the statement, it is saying that the last time it has erupted was in 1991. Okay. So that means if it erupted in 1991 for the last time, then it is obvious that it has remained inactive. Why are they giving you this additional statement which is not adding any value? Not adding any value means this is superfluous. Okay. So actually, if you try to understand कि this part, जदि एबे भाबो कि ये part टा पूरा mention ही करा जाई न था and it has remained inactive since then also the statement would not have changed है ना statement would have meant the same because last time it had erupted means तापरे आउ erupt ही नहीं so why did they give you this superfluous thing psychologically UPSC is trying to convince you गोटे आम ओडिया रे नहीं कि तिनि तुंडर रे छेली कुकुर सेही भलिया कथा से करिया चाहूथि से एते थर तुम कहि बार बार गोटे स्टेटमेंट रे subtle way they are trying to influence your psychology see it has erupted last time it has erupted in 91 and it has then also remained inactive since then you say ha seems maybe heitio ଦୁଇ ଥର ଏ କଥାଟା repeat ହେଇଗଲା ତ mind କୁ ସେମାନେ psychologically they are trying to impact you they are trying to convince you so this is actually a red flag to eliminate this you will get the answer one only okay this is the logic so superfluous words remember means those part of the statement which do not add any value means if you even eliminate that part the statement would still stand on its own so if there is such statement then probably entire statement is wrong this is the logic now let's try to have a few more examples how kon hi kare superfluous statement ro how would question dekho ki suppose India Africa summit what a question is India Africa summit ऊपर गोटे क्वेश्चन दिया है IAS
फर्स्ट स्टेटमेंट अछि कि it was held in 2015, which was a third such summit. Okay. Second statement is IAS was actually initiated by Jawaharlal Nehru in 1951. Okay. And the options are one only, two only, both correct, neither correct. So what will be the logic? Sir, first red flag because third such summit মানে superfluous হয়ে বুঝে and Very 2051 easily changeable. So মানে unnecessary information দিয়েছে red flag first. And okay. third one also মানে similarly समझ ही परिबो and was actually initiated. So both, so neither D. So if using this trick you went to this would not be the answer. Answer will be one. ठीक है. But still I'll be happy because at least you are using the logic. ठीक है देखो कोनी किसी भी लॉजिक किसी भी ट्रिक 100% परफेक्ट हुए ठीक अछि लॉजिक भूल ही जाए बेले बेले बट हम कोन नेट पॉजिटिव मार्क्स दरकार you have to attempt these using the logic. The first statement is actually correct, but that is a separate thing. Because this is knowledge based. हमें logic हिसाब रे गले year figure देची third such summit, so we'll assume कि this is wrong. तो एक red flag भाभी या को wrong कर दी, ठीक है? But actually this is correct. Second statement टा देखो, second statement ये जो word use actually, this is a superfluous word. ये वाला superfluous word टा को UPSC is using to convince you. Okay. Actually, it was initiated by Jawaharlal Nehru. If you had eliminated this, the statement would still stand. It is not adding any value to the statement. UPSC is only using this to convince you. So this statement is definitely wrong. Okay. So if you eliminate this, your answer would be one only. But okay, using the same logic, if you got neither D also, I will understand. The actual answer is this, but some people will also arrive at this option. But at least we are using the tricks and logics. Okay. Now another question, let's try to understand superfluous. How do these statements work? See, another question is, consider the following statements with respect to Asia Pacific Economic Council, APEC. Statement गुड़ा कौन अच्छे? First statement कौन सी की? APEC is a regional forum of Pacific Rim nations. Okay. Second statement कौन सी की? In fact, India has been recently admitted into APEC as a full-time member. Okay. So your options are one only, two only, both correct, neither correct. Tell me, red flag, green flag. Sir, second fact, सेटा में काढ़ी देले India has been recently admitted would still make sense. So probably red flag, sir. Second. Very good, excellent. So that means ki in fact, this is superfluous, right? This is not adding any value to the statement. So are you able to see? They are trying to convince you. UPSC is trying to convince you. You see, in fact, India has been recently admitted into APEC, so that you'll see ki ha hi thi wo maybe. Okay. Now, but try to understand. This is what you try: mutual compatibility or incompatibility. Compatibility or incompatibility. Now, are 1 and 2 mutually compatible? If APEC is a regional forum of Pacific nations, Pacific Rim nations, then India is not a Pacific Rim nation. Why would they admit India that to a full-time member? बुझियोछि? So that means कि both correct तो हबो ही नहीं, neither भी हबो नहीं, because जतले mutually incompatible थाए, जदि दुईटा रो opposite थिवो,
ताले गोटे करेक्ट हबो आ गोटे रॉन्ग हबो सो दैट मींस वन ओनली और टू ओनली हबो नाउ जदी आमे कोटा बेसी ग्रीन फ्लैग बेसी रेड फ्लैग कोटा लागो दिस इज ग्रीन फ्लैग दिस इज वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट रीजनल फोरम दिस इज a generic statement now this is a red flag because first of all there is superfluous phrase what achi second it is a full time member India cannot be a full time member of a regional forum of Pacific Rim nations so that means answer is one only बुझे Yes, sir. ठीक से अपन तो जहाँ पढ़ाई थी जहाँ भी आज डिस्कस कलो के कोथरे किछि डाउट अछि No, sir. ओके Sir, एलोरा आशीष यस हाँ sir, सर मैंने ठीक है No, sir, understood. हाँ someone was asking a doubt yes, sir, मैंने डाउट तो नहीं बट एग्जैक्टली सर असर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन गुडा रहउचे सर सेटा माने केनता करी हमें हमें सब अप्रोच करिवो करि पारबा एसेसन देखे अपन तो डिस्कस करे न क्लास में डिस्कस करे डोंट ओके वरी सर थैंक यू सर ओके uh what else okay let's discuss uh one more trick yes which number trick was this eighth I think ninth okay I will discuss so many tricks let's discuss 10th trick 10th trick is very straightforward a list of things etc so list when it is a list of things is it likely to be correct or likely to be wrong what do you think people think it is likely to be wrong but actually it is likely to be correct let's see how now this is also a counterintuitive logic why counterintuitive because when in a statement if they are giving suppose in one statement they are saying this is a list of things ki this okay then you are under doubt you are in such a dilemma ki even if you know that two of these things are correct then you are in doubt ki whether these would also be correct then you think ki maybe one of them would have been changed and therefore this statement would be wrong but believe me if you find that at least one or two of them are correct then you can assume the rest of these will also be correct this is usually a trend in UPSC okay now I'm not denying that this trend might change in the future but till now whatever we have seen that a list is usually they give list of things correct so I'm किसी example देने you will be better able to understand okay basically एथरे कौन की counter intuitive कहीं because किसी जो दी list हो किसी तमें article को जानी हो correct बोली other articles को doubt करिवनी unnecessarily कि सेटा wrong है let's try to understand through example there was one previous question to select the correct which of the following are correct with respect to antimicrobial resistance AMR okay now first statement was that it is related to bacteria fungi viruses and parasites second is India has set up a national surveillance system for AMR antimicrobial resistance and the options are one only two only both correct neither what is the answer what do you think makes the माने set up a surveillance system for antimicrobial resistance that is something would do I think your voice is breaking can you repeat sir I was saying ki the second statement looks like a green flag
this thing that a government would do Yes, and set correct. up it's a very generic statement. So Very good. So first statement, they are saying ki bacteria, fungi, viruses, and parasites. See, we know that antimicrobial resistance, it is, we usually read it with respect to bacteria and viruses, right? ଯେମିତି କି TB रे antimicrobial resistance जो हुए, that is related to bacteria. Virus सेमती, corona virus, antimicrobial resistance होती, that is a virus. People will have doubt whether it can also be related to fungi and parasites. Now, this is what I'm trying to tell you. There is a list of things given. You know कि a few of these items are correct. Then don't be unnecessarily suspicious कि other items may not be correct. Okay? So if it is a list of things, probably it is correct. Now you can think of it in another way. If antimicrobial resistance, see microbial, this terms comes from what? Microbes. Microbes means microorganisms. Microorganisms can be not only bacteria and viruses, it can also be fungi. It can also be parasites. Fungus, there are many fungus which are microorganisms. Many fungus are visible to the eye and many other fungus are microorganisms, very, very small fungus. Similarly, many parasites are namely tapeworm. Tapeworm is visible to the eye, but there are many other parasites also which are not visible. Okay. So that means if it is if bacteria and viruses are creating antimicrobial resistance, then fungi and parasites can also create. What is the problem? Antimicrobial resistance means microbes resistance created by the microbes. Okay. So don't be unnecessarily suspicious that only bacteria and viruses can do and fungi and parasites cannot do. In other words, you can also think is there no such disease created by fungus and parasites which could also develop antimicrobial resistance? There are many such diseases. And this is obviously a green flag because India has set up a national surveillance system for AMR. Very generic thing. If there is antimicrobial resistance, then the Indian government must have done something. Right? Government किसी ना किसी तो करती हो ना. So what is the answer? Both of these are correct. Okay. Now let's discuss another example. So, so the question is with respect to southern mountain forests of India, consider the following statements. First statement is that magnolia, laurel, cinchona, and wattle are some of the major tree species of this area. Okay. Second statement is they show vegetation from tropical to tundra climate with change in altitude. Okay. Now you tell me which are correct, which is correct, which is wrong, or both correct, both wrong. What do you think? सर मत लगुच ऑप्शन 2 टा रॉन्ग है पारे कहीं ना ट्रॉपिकल रु तुंद्रा मूव करबा को वेजिटेशन चेंज हो जाए आ सेम टाइप रो वेजिटेशन एठी जोडा सेठी एटा प्राय देखिया पे You are saying this is a red flag. Okay. यस सर What about statement 1? See, magnolia, डाउट laurel, अच्छी I know, because magnolia you have not heard in Indian context. Okay. Laurel you have not heard. But cinchona, you know, this is an Indian species. यस Cinchona is found in India. सिंकोनाटा यस सर मलेरिया पई यूज हुए मेडिकेशन पे सेति खाली जानी छी आ बाकीडा जणा नै Very good. आ वेटल टा Wattle मे भी बी तो सुनती हो. इन्वेसिव स्पीसीज यस इन्वेसिव Wattle, स्पीसीज yes. सेति की जानी छी In not only invasive species, wattle is very widespread not only across southern mountain forest but also in our Odisha range रे भी अछि, east Ghat, western Ghat सब भी अछि, right?
This is what I was trying to tell you. See, you know कि Kinchana and Wattle, these two are like this. You know कि these two are correct, but you are doubtful about Magnolia and Laurel. So here you use that trick. If in a list some things are true, you know, then other things do not be unnecessarily suspicious. So we will see that this is a green flag. Why? Because it is a list of things. So this is correct. Second is a red flag because second is a here it is an extreme statement. See, with altitude, no one is denying that with altitude your climate will also vary. Here you will have, you know, at same place, এটা ଗୋଟେ mountain ଅଛି, ତାର mountain foot ମାନେ ତାର କଣ କହନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ପାଦ ଦେଶରେ ତମର ହଉଛି tropical type ର climate ଥିବ, ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଟିକେ sub tropical type ର ରହିବ, ପୁରା highest zone ରେ may be alpine ତ କହିପାରିବାନି ମାନେ ଟିକେ cooler climate ଟିକେ ରହିବ, okay, but to say that it is tundra climate, tundra is extreme, tundra you can you understand arctic circle ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ. So here India रे केते भी tundra थोड़े ना climate type ର पहुंची, so this is extreme statement. So second टाको हम यदि काटी देबो then you will get one only as correct. Okay. तुंद्रा क्लाइमेट हिमालयन एरिया रे देखा जाए कि कोडी हिमालयन एरिया रे हिमालय हां yes, see Himalayan में ही परियो of course because तारा elevation सेति high is, but here the question is southern mountain forest it is not as high as Himalayan top रे certainly tundra climate is okay. ठीक है, so I think we have discussed how many tricks till now? 10. I think we discussed around 6 tricks today. Last class रे 4 trick discuss होतले, अभी 6 trick discuss होलो. Then तारा next class रे मु try करबी आउ 6-7 tricks आउ discuss करिया ପାଇଁ. We are coming towards the end of our class as such. माने ये जो हमारो tricks वाला class हमारो प्राय सरियो जाउ, ठीक है. So after that we will move on to other topics as well. Okay. So any doubts so far in today's class? Thank you very much, sir. No, sir, clear. Thank you. ठीक है, then we'll resume in the next class. I will update the schedule. Okay. So that's Okay, it sir. for Thank you. today. Thank you very much. Thank you so much, sir.